देखी करते हैं चैतन्य प्रणाम very good evening how are you guys okay so start करिबा class before that share ware करि देबा okay तो स्टार्ट करि परिबा कौन अच्छे आज क्लास ना मैम प्लांट फिजियोलॉजी अच्छी ऑलरेडी आपण मैंने जानी संती प्लांट फिजियोलॉजी रे हमें सब ए टू जेड प्लांट विषय रे ही देखुचे राइट सो सी ऑलरेडी आपण मैंने कहूची हमर वन डे एग्जामिनेशंस रो कोन छी ना मैम महापैक 3499 अछि जोटा कि आपन को गत काली मैराथन चलीथिला ता पई की ऑफर एटार वैलिडिटी रहूची दैट इज 1.5 ईयर यार वैलिडिटी रहूची एटार ओके तो जदि आपण माने एथरु किछि बैच नउचंती 3499 रे आपनकर होल 1.5 ईयर भीतर जते भी एग्जामिनेशन आसीबा कंडक्ट हेसिबा सेम आपनकर वेदांग टीचिंग रे आपण माने आर्ट्स रो पीसीएम सीबीजेड किछि भी बैच परचेज करूसंती 1.5 ईयर सॉरी 1 ईयर रहिबो एंड प्राइस रहउची 1499 ओके ओके गाइस स्टार्ट करिबा क्लास ओके सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल tell me the primary function what the primary function of roots is function amar कोन ना primary basic function amar roots रो कोन रहिबो ना मैम फर्स्ट ऑप्शन में कोन अछि ना photosynthesis का द्वारा होची ना मैम this is the part of the leaf कोन होची photosynthesis occurs in the green leaves कोन ना chlorophyll pigment पई हमें रिलेट करूछे for the chlorophyll pigment
कहा सहित ना मैम ग्रीन लीफ सहित ग्रीन लीफ सहित आम रिलेट करूचे दैट इज द फोटोसिंथेसिस देन एब्जॉर्प्शन वाटर कौन कहूचे ना मैम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ही रहउची मेन कहार ना मैम रूट्स मानकर काम रहउची जो वाटर एंड मिनरल्स ए सब को कौन एब्जॉर्ब करूची केमिति ना सॉइल रु न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करूची या फिर वाटर एंड मिनरल्स करूची थ्रू दिस through this that is the absorption of water and minerals will be the right answer. So root absorb the water and minerals from the soil through what na through the root hairs तार रोची main function एटा कहा द्वारा ना मैम root hairs द्वारा ये root hairs द्वारा ये कौन ना absorb करूची गोटे मिनिट देलो ओके तो रूट हेयर्स आमे कहबा दैट रूट एब्जॉर्ब्स रूट हेयर्स तो हमर कोन ना वाटर हेला मिनरल्स हेला ए सब हमर एब्जॉर्ब्स होची देन मते को रिप्रोडक्शन कहार काम ना मैम सम रूट्स एग्जांपल आपण माने नै परिबे कहार ना स्वीट पोटैटो रो से माने वेजिटेटिव प्रोपागेशन पूरा करंती सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सो समहाउ हमें कहि परिबा रूट द्वारा हेई पारुची फॉर एग्जांपल आपण माने नेबे कहार ना मैम स्वीट पोटैटो रो क्लियर स्वीट पोटैटो दैट इज को मेथड जदि आपण मानकु पचारिला ताहाले आपण मान लिख परिबे दिस इज बाय द वेजिटेटिव प्रोपागेशन वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्लियर देन मते को स्टोरेज ऑफ फूड कहा द्वारा हुए ना फूड ता हमर स्टोरेज हे कि रुहे बाय व्हाट स्टोरेज ऑफ फूड कहा द्वारा हुए मते को ना मैम सम इन कैरेट केसेस रे हमें देखि परिबा दैट इज बीटरूट दाको हमें कोन कहि परछे ना रूट मॉडिफिकेशन होउची जोथि पई कि स्टोर हे कि रहउची हमर रूट रे वेरी गुड रोहित गुड इवनिंग चलो सो हमें कहि परिबा कि स्टोरेज ऑफ फूड कोठी होची ना समहाउ रूट रे होची बट सीन इन द कैरेट कोठी ना मैम कैरेट रे को देखि परिबा कैरेट हेला बीटरूट हेला एथे हमें देखुचे कोन ना मैम स्टोरेज हे कि फूड रहउची क्लियर एंड एथे हमें कहि परिबा द रूट मॉडिफिकेशन आल्सो अकर्स जोथरे कि मेन रूट हमर मॉडिफाइड हे कि कोन ना गोटे वेजिटेबल से कन्वर्ट हे जाउची नेक्स्ट मते कुआ चलो so adventitious roots are formed sorry arise from adventitious root हमर arise होची कोथरु मते कहिलो मैम साउंड आसुनी इम्पॉसिबल म्यूट तो बिल्कुल भी नहीं रोहित चैतन्य गाइस साउंड क्लियर अछि ना नहीं मते कहिलो संबित आसी कोन कहलेनी साउंड आसुनी साउंड तो क्लियर अछि संबित वॉल्यूम टिके बढ़ाओ अच्छा क्लियर साउंड ना चलो तो मते को एडवेंशियस रूट्स अराइज फ्रॉम एडवेंशियस रूट हमर अराइज होची कोथरु मते टे कहिलो एडवेंशियस रूट कोथिरु अराइज सब हमर ऑप्शंस कोन दोची ना मैम रेडिकल लु कोन हेई परिबो कि नो मैम नॉर्मली हमें कहूचे प्राइमरी रूट्स आर कम फ्रॉम द रेडिकल जदि नॉर्मल रूट हमें देखिबा नॉट एडवेंशियस रूट जदि आपण मानकु पचारिला कोन ना मैम नॉर्मल रूट कोठु आसुची इन द केस नॉर्मल रूट ताहले हम कहूचे दैट इज रेडिकल ले कन्वर्ट होची आपण पढांतु क्लियर अछि ओके ओ सॉरी ओके सर so any part of the plant other than radical any part of the plant other than radical हमें कहि परिबा कि yes ma'am that is the adventitious roots कोन ना that is any part
any part of the plant other than the radical, that is the adventitious roots, grow कोउथरु हुए ना मैम stem रू leaf रू एमाने grow हे पारंती. For example आपण माने परिबे grass हैला maize हैला एमाने नै परिबे कोन हैला ना grass and maize एमानकु आपण माने नै परिबे काहेकि ना मैम ये आइदर स्टेम रू न हले लीव्स रू मॉडिफाई हे कि गोटे हमर कुथरे ना रूट रे कन्वर्ट हे पारुचंती. सो आपण कहि परिबे कि दिस इज कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम स्टेम or leaves or leaves. Is that clear? Very good. So मते कुह जो ऑप्शन हमर कोन अछि ना एम्ब्रियो सहित कोन हम किछ रिलेशन करूचे कि नो मैम एम्ब्रियो गिव्स द रेडिकल या फिर हमें कोन कहूचे ना मैम प्लूम्यूल रेडिकल सहित हम को रिलेट करि परिबा. नेक्स्ट को प्लूम्यूल कौन कहूची प्लूम्यूल कौन कहूची मते को दिस इज सो हमर कोन सूट्स दिस इज द सूट्स दैट अराइज फ्रॉम द प्लूम्यूल ये हमर गोटे सूट सिस्टम जोटा कि प्लूम्यूल गोटे पार्ट सेइथुर हमर सूट ता जते बेले डिफरेंशिएट होउची हम ता कोन कहूची ना सूट जते बेले डिवाइड होउची ताको हम कोठु डिवाइड करची ना मैं प्लूम्यूल रो डिवाइड करची. दिस इज नॉट द रूट दिस इज नॉट द रूट गाइस. ओके नेक्स्ट चलो मते कुआ ब्रीदिंग रूट्स आर फाउंड इन ब्रीदिंग रूट्स हमें कोठु पाई परिबे मते कहिलो ब्रीदिंग रूट्स आर फाउंड इन वेयर मेज सहित रिलेटेड राइस सहित मैंग्रोव प्लांट सहित सनफ्लावर सहित ब्रीदिंग रूट्स हमें कहा को कहूचे एंड दिस कैन बी रिलेटेड विथ व्हिच प्लांट हमें कहि परिबा मेज सहित हबनी बिकॉज़ मेज हैज द कोन ना मैम स्टिल्ट रूट्स कोन केते टाइप रो रूट्स रहउची ता भितरु स्टिल्ट रूट इज अनदर वन कौन होउछ रे stilt roots. Okay, so maize is categorized under the stilt roots. एते कम पिला कौन मैम ग्रुप रे शेयर हेची तो अरे ग्रुप रे शेयर हेची बट सीबीजेड रे पिला भी रहया दरकार ना देखिबा पई तो नॉर्मली एते डीप रे तम मानकर किछि रिक्वायरमेंट नाही ना देखिबा लागि फिर भी तम माने अच्छा दैट्स गुड बट जो मानकर लाइक एसएसबी टीजीटी रे सीबीजेड नाही से माने आसी के भी कोन करिवे क्लास रे. So rice सहित हम रिलेट करिबा this is the fibrous root system. Rice has what? Now this is considered as the fibrous root system. Then कौन आसिला ना मैम mangrove forest जोटा को आपण मानु कोन कहितिली ना मैम हेंताळ वन. So this under the pneumatophores. So mangrove forest कहा अंडर आसे ना pneumatophore अंडर आसे that grows upward. ताले राइट आंसर कोन हबो ना mangrove that is under pneumatophores. That under the pneumatophores and हमें कहि परिबा that is कोन ग्रो केमिति हुए ना मैम अपवर्ड ये ग्रो हुए to take the oxygen and the water logged soil. So rhizophora हैला या फिर हमें कोन rhizophora को आपण माने यार एग्जांपल नै परिबे प्रॉपर एग्जांपल कहार ना rhizophora को नै परिबे. चलो नेक्स्ट सनफ्लावर गाइस नुआ दिस इज द टैप रूट सिस्टम. सनफ्लावर को आपण माने कहबे जदी ताको आपण माने टैप रूट सिस्टम रे कंसीडर करिवे. ओके चलो नेक्स्ट मते कुआ प्रॉप रूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉप रूट्स कहार कैरेक्टरिस्टिक्स मते कहिलो प्रॉप रूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट मस्टार्ड तो बिल्कुल हबनी मस्टार्ड भी हमर कोन जेहेतु पूरा ऊपर गछर जते बेले को टाइप रो छोट छोट गछ तार ऊपर जते बेले हमर कोन फुलटा फुटी थाए हमें ताको होचे टैप रूट सिस्टम. सो डेफिनेटली ये नुवा मस्टार्ड हमर कोथरे जीवन ना मैम ये टैप रे पळेबो ये टैप रूट रे पळेबो. सो banyan हबो कोन ना मैम banyan इज द प्रॉप रूट सिस्टम कोन द thick hanging roots जोठी अछि ताको हम कोन कहू जे ना that is the banyan. So banyan because of having the thick hanging roots. Okay
So mango haba ki? No ma'am, mango will not. Mango will be not because mango is the normal tap root system re pale asiba. Rice hele se amra fibrous root re pale aschi. Okay? Chalo mate next kuha storage katha. मते को स्टोरेज रूट्स आर सीन इन स्टोरेज रूट आपण माने कोठी देखिबा को पाइबे मते कहिला स्टोरेज रूट्स आर सीन इन व्हेयर स्टोरेज रूट्स आर सीन इन कहितली कैरट हैला बीटरूट हैला यार एग्जांपल माने आपण माने नै परिबे कैरट हैला बीटरूट हैला को नै परिबे पोटैटो ओनियन व्हीट एगुडा हबो की नो पोटैटो हमर कोन ना स्टेम ट्यूबर रे जीवो पोटैटो इज अंडर मोर पीसीएम बट काले काम रे आसीओ बोली टिके देखुची अरे वाह तो पोटैटो सहित हमें रिलेट करि परिबा कि पोटैटो इज अंडर व्हाट ना मैम दिस इज द स्टेम ट्यूबर अंडर आसुची दिस इज नॉट द कोन रूट रू ये डेवलप हेनी पोटैटो इज ऑलवेज कोन डेवलप्ड फ्रॉम द स्टेम पार्ट रू ये डेवलप हेसी सो ओनियन को मते कहिलो ओनियन को हम रिलेट करछु कोथु ना बल्ब रू बल्ब मींस कोन कहउचे ना स्टेम प्लस लीफ से मिसी जाउची ताको हमें कोन कहउचे ना मैम बल्ब कहउचे so bulb is nothing but the stem plus root clear stem sorry stem plus root nahi stem plus leaves okay then mate ko wheat ko under asibo मते को व्हीट हेले कोन आसीबो ना मैम व्हीट हमर राइस एगुला सब कोन ना फाइब्रस रूट रे पळे आसीबो ए माने सब को रूट सिस्टम रे पळे आसीबे ना फाइब्रस रूट रे जोथरे की बहुत ही थिन रूट सब आसी थाए सो फाइब्रस रूट रे हमें पळे आसीबो जेमिति कि आपण माने देखसंती धान गछ हैला या फिर गहम गछ हैला केमिति होची एंड तांकर चेर उडा आपण देखिथिए बहुत ही थिन तांकर थाए बहुत ही एक्सट्रीमली थिन तांकर कोन हेयर रूट्स पूरा थाए so this one is known as what na ma'am this is the fibrous root कोन ये ना मैम ये होची हमर fibrous root clear चलो नेक्स्ट मते को द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम रा मेन फंक्शन हमें कहा को कहउचे मते को स्टेम रा मेन फंक्शन हमें कहा को कंसीडर करूचे मते को दैट इज एब्जॉर्प्शन हुआ एंकर्स नुह कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड नॉट एट ऑल फोटोसिंथेसिस ओनली नो सो राइट आंसर कोन हबो मते कुह कोन हबो ना मैम दैट इज द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड कोन हबो दैट इज द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम सो वी कैन से द हमर कोन एंकरेज होउची जदी फॉर एग्जांपल आपण माने कहि परिबे रूट एंकर करूची रूट कोन करूची ना एंकर्स करूची प्लांट को राइट so anchorage हेले कोन करूची root anchors the plant then absorb होची कोन that is done by the roots हमर कोन proper supplement हमर कोथरु ना soil रू water nutrient ए सब absorb करूची through the roots absorption method होची then मते को हमर photosynthesis होची कोथिरे ना photosynthesis हमर only leaf रे हे परिबो this is only in the modified stems like the green cactus द्वारा हमें एग्जांपल नै परिबे कोथिरे ना मैम green cactus और आपण माने कोन chlorophyll को आपण माने एग्जांपल नियंतु okay chlorophyll clear is that clear very good so conduction of water and food that is done by the xylem and phloem in the stem so conduction जदि आपण माने को कोन कहबो ना food कहिले आपण माने always consider करिवे that is phloem and water कहिले consider करिवे that is the xylem so xylem हेला phloem हेला एई दि जण को आपण माने कोथि पई ना water and food रो कोन absorption and तांकर न्यूट्रिशन पई रखुचंती नेक्स्ट मते को द पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एबे ही कहितली पोटैटो आसिले आपण माने मॉडिफाइड करिवे दिस इज नॉट एट ऑल अ रूट मॉडिफायर सो रूट सहित हमें स्वीट पोटैटो को कंसीडर करि परिबा इज अ फूड ऑफ द टुबोरो ओके बट मते रूट सहित रिलेटेड कला सॉरी रूट कहूची स्टेम सहित राइट आंसर कोन हबा पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम नो लीफ केमिति हबो चैतन्य मन इच्छा उडे मारंती बोली मार दोछ ना कि
That is stem, option B will be the right answer. Underground stem to work with the birds. ताको हमें कौन birds को कौन कहते हैं तारा eyes. A leaf सहित हेले कौन हबो? No ma'am, there is not leaf, there is not fruit also. Okay, चलो next मते कुआ. Underground stem used for propagation is, underground stems used for propagation is what? Underground stem used for propagation हमें ताको कौन कहूचे मते कुआ. कॉर्न को हमें बिल्कुल कहूने. कॉर्न रो एग्जांपल आपण नै परिबे कोन ना मैम कोलोकेसिया. टुबर हेले कोन कहूचो ना टुबर को त आपण माने एबे ही जस्ट पढेली कोन ना पोटैटो को नै परिबे. पोटैटो को नै परिबे. राइजोम हेले कोन कहि परछो मते कुआ ना राइजोम आपण माने परफेक्ट एग्जांपल कहार नै परिबे ना मैम जिंजर रा. कहार जिंजर. Then right answer कौन हबो ना मैम all of the above. Underground stem पचारि जी तो जिंजर हेला, पोटैटो हेला, कॉर्न हेला, ए सब तिक हमर कोथरे जीवन ना अंडरग्राउंड द कोन soil underground the stem हमें कहि परिबा. Is that clear? Very good. Madam, previous answer stem हबो. Potato is a modification of stem, not the leaf. अच्छा यार previous answer तुम दोथलो की later तो मैसेज आछी चैतन्य. Next मते को phylloclade is seen in. Phylloclade हमें कोठी देखिबा. मैम काली क्लास ता बेस्ट हेथिला मळे. काली क्लास कोन थिला? काली रा मैराथन विषय रे कहउछ की तो मते को phylloclade is seen in where? That is in the opuntia. कोठी देखिया को मिले ना मैम opuntia रे देखिबा को मिले. Okay, so the stem modified to the flat green leaf माने green leaf like structure रे for the photosynthesis जेतेबेले convert हुए the process is called as what ना opuntia process. P हेले P has the leaf हमर कोन leaf tendril हमर अछि not at all. Mustard हेले that is very normal leaves. Rice that is the normal grass leaves को हमें rice रे नै जाउ छे. Is that clear? Next इबा next चलो the thorn is a modification of. Thorn कहार modification मते कहिलो. Thorn is the modification of what? Yes, को मते thorn आसिला माने कंटा. कंटा कहारु modification हुए. कंटा जेतेबेले आपनकर गछरु बाहरे संगे संगे तो से कोन लीफ रु कंटा आपन देखछथि बाहरेनी, रूट रु तो चेर रु बाहरेनी, फळ रे तो न थाए. मोस्टली कोथरे हमें पाउचे ना मैम स्टेम रे पाउचे. Thorns are hard and that is the woody stem modification. That is हमें कहि परिबा what ना the bougie vanilla. Clear? Next चलो मते कुआ leaves are mainly meant for. काई तो मैंने तो लेटर आंसर दोचा प्रीवियस आंसर नहीं कहउचा मते. ओके मते यार आंसर दिया. leaves are mainly meant for transpiration, photosynthesis, respiration or storage. आपण मान जानि संदी photosynthesis the kitchen of the plant हमें कहा कहउचे ना that is the leaves is known as the kitchen of the plant. Clear? The primary role is the green pigment chlorophyll. Is that clear? Transpiration हेले कोन कहउचे that is the secondary role. Respiration हेले that entire plant respires. गोटे गोटे particularly position कथा particularly part कथा हमें कहिबानी. Storage त हमरा modification relate करे. Right? चलो next. Next मते को parallel venation is a typical of. मते को parallel venation हमें कहा को कहउचे. This is a typical of what? Parallel venation हमर कोन कहउची ना जेतेबेले आपनकर डाइकोट प्लांट्स कथा कहिबो. डाइकोट प्लांट कथा कहिले आपण माने कहिबे that is the reticulate venation. कोन हबो ना मैम this is reticulate venation. Okay, so parallel venation कोठी आसीबो ना मैम only the monocot plants रे. कोठी ना monocot plants रे example आपण माने नै परिबे rice हेला, maize हेला याको आपण माने example नै परिबे. Both हेले both आपण माने देखिबे this is very rare. And gymnosperms that is the different venation. Okay, gymnosperm and angiosperm this is the different venation. Next मते कुआ reticulate venation is seen in. एबे कहिली reticulate venation parallel venation हेले monocot सहित relate करिवो. Reticulate venation हेले कहा सहित relate करिवो. Example भी देली नहीं rice and wheat को आपण माने करनैथिली कहा सहित ना मैम this both is the parallel. This both is the parallel. So कौन रहिला mango और maize रहिला. Mango and maize रहिला.
अच्छा मेज भी अच्छी कि मेज भी हमर कोन पैरेलल पड़ेबो सो ऑड वन आउट राइस व्हीट मेज ये समस्त कोन गोटे कैटेगरी जाउचंती रहिला कि ना मैंगो इज अंडर द रेटिकुलेट ऑन कोसिस्टेड वेनेशन क्लियर नेक्स्ट चलो मते कुआ होल्ड फाइलाटोक्सी अकर्स इन फाइलाटोक्सी कोन जते बेले आपण मानकर स्टेम कन्वर्ट हो जाउची को पोजीशन ने ताकू कहूची मते कुआ फर्स्ट आंसर दियो मते होल्ड फाइलाटोक्सी अकर्स वेयर होल फाइलाटोक्सी आमे कोठी अकर होचे बोली कहूचे मते कुआ दैट मींस कोन ना लीव्स एट वन नोड दैट मींस कोन ना लीव्स एट द वन नोड दैट इज नोन एज द अलास्टोनिया व्हाट इज द फाइलाटोक्सी गाइस फाइलाटोक्सी हमर कोन एग्जैक्टली ना मैम फाइलाटोक्सी माने हमर जते बेले स्टेम रे गछर स्टेम रे जते बेले डिफरेंट कोन पोजीशन रे मैम लीव्स माने आसीकी कोन मैम जॉइंट हुंती सो जो लीव्स माने आसीकी जॉइंट हुंती डिफरेंट नोड्स रे भी से माने कनेक्ट हुंती एंड डिफरेंट पोजीशन रे भी हुंती दैट मे बी पैरेलल दैट मे नॉट बी so this method is known as what that is the method is known as the phylatoxy clear very good chala next mate ko in p leaf tendrils are modification of in p the leaf tendrils are the modification of what mate ko are the modification of petiole बिल्कुल हबनी कारण petiole is the कोना modification of the कोठी वे clematics आमे कहि परिबा clematis रे petiole टा modification हे जाय ओके देन कोन होइला ना मैम स्टिपुल सहित हम रिलेट करि परिबा कि ना मैम कोन ना स्माइलैक्स रे हे परिबा स्टिपुल स्माइलैक्स रे मॉडिफाइड हे जाय देन मते कोन हबा राइट आंसर ना लीफलेट कोथरे इन द पी प्लांट हमर लीफलेट ही मॉडिफाइड हुए पी प्लांट रे हमर कोन हुए ना मैम लीफलेट मॉडिफाइड हे जाय भीतर हमर कोन पूरा पी सजे हे कि रहंती तो एटा कोथरो ना लीफलेट टा ही मॉडिफाइड हे कि पी रे कन्वर्ट हुए clear getting me very good so reaches happens on the climber case रे हमें कहूचे next मते को the arrangement climber means आपण माने लता भले जो गछ मारुची सपोज छचिंद्रा को नै परिबे काकुडी की नै परिबे जन्ही को नै परिबे for example then मते को the arrangement of flowers on the floral axis is called the arrangement of flowers on the floral axis ताको हमें कोन कहूचे कहिलो the arrangement of the flowers right answer कोन हबो phyllotaxy हबो कोन arrangement of leaf phyllotaxy एबे कहितली that is the arrangement of what of leaves okay so कोन हबो right answer ना मैम inflorescence arrangement of flowers means inflorescence कोन हबो very good चैतन्य that is inflorescence that is we can say placentation कहले कोन कहउचे ना the arrangement of the ovules the arrangement of what na ovules हेले हमें ताको placenta कहउचे clear माने placentation कहउचे phyllotaxy हेले arrangement of leaves inflorescence हबो arrangement of flowers then venation already कहि सारिची that is the arrangement of what obviously veins मानकर arrangement veins मानकर arrangement next मते को yes the qua in racemose inflorescence growth of the main axis is mate qua in the racemose inflorescence growth of the main axis is kon rahibo growth of the main axis ame kaha ku kahuche mate kuha that is definite or indefinite definite kahi ki hoboni because ame janiche the chymose gap re racemose is opposite of the chymose so chymose रे हमें कहउचे that is the definite whereas racemose रे कोन हबो that is indefinite कोन हबो that keeps growing and the flowers arise in the lateral stage laterally हमर धीरे धीरे flowers आसीबो पुनी हमर कोन ना खरा दिन आसीबो पत्र झडा दबो पुनी थरे गछ उठिबो पुनी थरे वर्षा हबो पानी पडिबो पुनी पत्र उठिबो पुनी गछ फूल आसीबो फळ आसीबो तो मेथड टा को हमें कोन कहउचे ना मैम that is the racemose method कहउचे that is the indefinite one next मते को sunflower shows what sunflower हमर कोन shows करछु मते को that is the spike
स्पाइक केमिति हो स्पाइक सहित आपण एग्जांपल कोठी नै परिबे ना मैम व्हीट केस रे ताको आमे व्हीट रे एग्जांपल नै परिबे व्हीट रे एग्जांपल लेबा कार स्पाइक रो मते को कैपिटुलम हबो कि यस मैम दैट इज द हेड इन्फ्लोरेसेंस दैट इज द हेड इन्फ्लोरेसेंस दैट इज द कैपिटिकुलम सॉरी कैपिटुलम ओके नो बेटा ऑफलाइन क्लास अवेलेबल नहीं ओनली ऑनलाइन क्लास ओके देयर इज नो ऑफलाइन क्लास ओके चलो सो नेक्स्ट दिबा मते को ए बाइसेक्सुअल फ्लावर हैज गोटे बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम जदी पिक करिके धरिबा ताले इट हैज अ ओनली स्टेमेन थिबा कि मैम स्टेमेन ओनली कोठी ना मैम मेल फ्लावर रे थाए द स्टेमेन इज द पार्ट ऑफ द मेल सो मेल फ्लावर सहित हम याको रिलेट करिबा ओनली मेल फ्लावर रे ओनली कार्पेल्स कहिला हमें कंसीडर करिबा कि नो मैम ओनली जदी आपण माने कार्पेल्स कहिबे दैट इज फाउंड ओनली इन द कोन ना मैम फीमेल फ्लावर रे then both stamens and carpels पाइबा कि yes मैम कारण कार्पेल अछि फीमेल ने stamen अछि मेल ने so both जदी पाइबा that is the right answer next को flowers with both male and female organs जो flower पाखे both male and female organ थिबो ताकू हमें कोन कहूचे मते को जो flowers both male and female organ को show करूथबो unisexual तो बिल्कुल कहबेनी obviously that is known as what ना bisexual that is having the both sex organ is that clear very good चलो next मते को the arrangement of ovules inside the ovary is called हमर ovule भितरे प्रणाम रश्मिता सॉरी रश्मि प्रभा तो मते कहंतु the arrangement of ovules inside the ovary भितरे हमर ovules मानकर arrangement हेगी थाए से arrangement को हमें कोन कहूचे ऑलरेडी तुमको कहिची इन्फ्लोरेसेंस हेले कोन कहबा ना फ्लावर सहित रिलेट करिवो फाइलोटेक्सी हेले कोन ना मैम लीफ सहित हमें इन्फ्लोरेसेंस हेले कोन सहित ना मैम फ्लावर सहित रिलेट करूछु का सहित ना फ्लावर सहित रिलेट करूछु एंड हमर फाइलोटेक्सी हेले कहा सहित ना मैम लीफ सहित अरेंज करूछु राइट सो प्लासेंटेशन गोटे रहिला वेनेशन हेले वेन सहित फ्लोरोसेंस हेले कहा सहित ना मैम फ्लावर सहित का सहित ना फ्लावर सहित हमें ताकू कनेक्ट करूछु तो रहिला कि ना मैम प्लासेंटेशन रहिला कि ना मैम प्लासेंटेशन दैट इज द ओव्यूल अरेंजमेंट को हमें प्लासेंटेशन बोली कहूचे इज दैट क्लियर चलो नेक्स्ट मते को मार्जिनल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन मार्जिनल प्लासेंटेशन कोठी हमें देखिबा को पाइबा मते को द मार्जिनल प्लासेंटेशन इज फाउंड वेयर कोठी मिलिबो ऑब्वियसली कोठी ना मैम पी प्लांट रे ओव्यूल्स इन अ रो along with a margin of ovary that is found in the pea plants mustard रे मिलिबो कि नो मैम mustard रे that is the कोन कहि परिबा ना मैम that is the parietal mustard रो that is parietal method रे हमें कहूचे sunflower हेले कोन हबो that is the inferior ovary sunflower ovary हमर कोन थाय ना मैम this is the inferior ovary this is the inferior ovary system what is about the maize ना मैम maize is very passive okay चलो next मते कुह the axial placentation is found in axial placentation हमें कोठी देखुचे मेज मस्टर्ड राइस तो माने तीनटा ताकू जदी कैटेगराइज करबे समस्त कोना बेसल मेज एंड राइस एमान तो कोथरे ना बेसल रे पळेबे ये त हमर कोथरे ना लैटरल रे पळेबो रहिला कि ना मैम टमाटो रहिला कि ना मैम टमाटो सॉरी लैटरल के जिबो एटा पेराइटल ले जिबो ना सॉरी सो ये पेराइटल ले जिबो रहिला कि ना मैम टमाटो is that clear रहिला कि टमाटो that ovules and central ovules on the central axis of the multiocular ovary next mate ko drupe is a fruit seen in drupe is a kind of fruit that is seen in where apple रा भीतर हमें drupe पाइबा कि मैम apple रा भीतर जो गोटे थाए को शेप रे थाए apple टा ना मैम एमिति किछि शेप रे थाए apple टा राइट
तो ये आमर कौन सीड्स गुड़ा थाए सो ये जो स्ट्रक्चर टा थाए ये स्ट्रक्चर टा को आमे कौन कहूचे एपेल लो ना मैम दिस इज नोन एज द पोम कौन ना मैम याको आमे पोम कहूचे बट एठी कौन पचासी ना ड्रूप ड्रूप कोठी ना मैम मैंगो भीतर आमे पाउचे ड्रूप दैट मींस द पेरिकैप 3 लेयर्स थाए आउटर स्किन गोटे थाए एडिट आमर कौन सॉरी दैट इज नोन एज द एडिबल पल्प जोटा आमे खाउचे तापर ओटा आउटर लेयर तापर पुनी टाकुआ पाउचे राइट सो तीनटा लेयर हमर कोठी अछि ना मैम ओनली मैंगो रे हमें पाई पारुचे क्लियर क्लियर वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते को द कैरियोप्सिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ कैरियोप्सिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट्स ऑफ व्हाट कैरियोप्सिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ व्हाट मेज हबो मैंगो हबो पी हबो और एप्पल हबो राइट आंसर दियो जते बेले आपन को पेरिकार्प fused with the seed कहूची when pericarp is fused with the seed cap then हमें ताको कौन कहूचे ना मैम this is known as the caryopsis so ये कहा सहित ना मैम मेज सहित रिलेट करि परिबा कहा सहित ना मेज सहित रिलेट करि परिबा याकू मैंगो सहित हबनी मैंगो रो त ड्रूप अछि पी हबनी पी इज अ लिगुम एप्पल हबनी एप्पल इज अ पोम ओके चलो नेक्स्ट मते कुआ in monocot seeds the single cotyledon is called monocot seed रे single cotyledon को हमर कौन कुआ जाय in a monocot seed single cotyledon is called as what endosperm हबनी endosperm कौन करूची ना स्टोर करी की फूड को रखुची it stored the food then plumule हमें कौन कहूचे plumule ला कौन काम रहउची ना मैम this is known as the shoot tip this is shoot tip then कौन होची ना कोलियोफ्टाइल राइट आंसर हबो कि नो मैम दिस इज द सिल्क कवरिंग ऑफ द प्लूम्यूल प्लूम्यूल ला कवरिंग को ए प्लूम्यूल ला कवरिंग को हमें कौन कहूचे तो राइट आंसर कौन हबो ना मैम दैट इज द स्क्रूकेटल कौन हबो ना मैम स्कूटेल ओके वेरी गुड दिस इज द सिंगल cotyledon नेक्स्ट मते कुआ द फैमिली Fabaceae has which type of fruit Fabaceae गोटे फैमिली इट has सबुठी होची क्लास काई व्यस्त होच वेदांत क्लास रे राती क्लास केबे बंद हुए नाही मलय सब दिन राती रे हुए 10 रे तो द फैमिली Fabaceae has which type of fruit को टाइप रो फ्रूट रहउची कोन Fabaceae पाखे रे मते कुआ द Fabaceae has a legume टाइप रो फ्रूट एग्जांपल आपण पी को नै परिबे बीन्स को नै परिबे दिस इज अंडर द कोन Fabaceae हे गले कोन ना पी हे गला बीन्स हे गला आपण को हमें नै परिबे ट्रूप हेले आपण मान जानसथि मैंगो भीतर पाउचे कैरियोप्सिस हेले आपण माने कोथरे ना मैम राइस भीतर पाउछु कैप्सूल हेले कोथरे ना मैम कटन भीतर कैप्सूल पाउछु कटन राइस मैंगो एंड legume will be the Fabaceae family next mate ko the Malvaceae stamens are Malvaceae stamens हमें कहा को कहूचे and these are what type of that is the that is the monadil yes that is the monadilphous or that is the didelphous or that is the foliadelphous or that is the syngenesious कौन हबो राइट आंसर ना मैम दैट इज द mal aim for Malvaceae aim for the monadelphous okay what is monadelphous na that the stamens united into one bundle yes so legumes is the amara dali jatiyo next mate aso the monadelphous kon कहउची ना मैम this is one bundle that is stamens are united with one bundle that is the monadelphous didelphous हेले कोन हबो ना जते Fabaceae माने केमिति आसंती ना मैम 9+1 ग्रुप रे आसंती yes ना नहीं 9+1 ग्रुप रे हमर कोन ना मैम that is the didelphous और ताको हम Fabaceae बोली कहउचे पॉलीडेल्फोस को कहले कोन कहउचे ना जते साइट्रस फ्रूट आसुची जते सबु साइट्रस फ्रूट आसुची ताको हम कोन कहउचे पॉलीडेल्फोस देन को सिंजेनिसियस हेले हम कोन कहउचे ना तो एंथर सेते बेले यूनाइटेड हेथिबो कोन एठी हमर स्टैमेंस माने यूनाइटेड होउची एथिरे कोन ना एंथर्स यूनाइटेड हेथिबो क्लियर नेक्स्ट चलो द ओवरी इन Asteraceae is ovary हमर Asteraceae सहित रिलेट करि परिबा कि
The ovary is related superior तो बिल्कुल हबनी superior हबो कोउथिरे नै मैम asteresis सहित नुह but the brachycesis जदि पचारिला ताहाले that is the superior ovary but sorry that is the asteresis सहित हमें कोन कहबा that is the below the floral part रो below रे थाए that is the inferior one कोन हबो that is the inferior one semi inferior हेले that is halfway हमरा semi inferior रहे apocarpus हेले कोन कहजो that is the ovary with free carpus जते बेले ovary पाखरे free carpus थाए जोटा कि compulsory not in all the cases so free ovary carpus जते बेले हमरा थाए तो ताकू हम रिलेट करूचे apocarpus सहित नेक्स्ट मते को that is the poaceae family flowers are generally poaceae सहित हमें का को रिलेट करिबा को that is generally small हे थांती inconspicuous हे थांती and wind pollinated हे थांती clear very good ए जो brightly colored insect pollinated ए माने कोन थाए ना insect pollination हे थांती ए माने generally grass रे न थांती not in grass ओके ए जाइगोमॉर्फिक कोन कहिला पिले माने ना फैबासी फैमिली रो प्लांट्स मानु को हमें कहउचे जाइगोमॉर्फिक क्लियर तो आज पई ए 30 टा क्वेश्चन जे आपण माने पई नै के आस्थिली तो आपण माने मु जानि छी बहुत पिलांक माइंड रे बाउंस होतबो बट जो माने सिंसियरली प्रिपेयर करचंदी फॉर द एसएसबी हमर कोन सीबीजेड पई से माने पई बहुत ही हेल्पफुल हबो ओके देन अगेन देखा हबो नेक्स्ट क्लास पुनी बॉटनी रो किछि न्यू क्वेश्चन सहित थैंक यू सो मच टिल देन हैव ए गुड डे टेक केयर थैंक यू